Okay. So the cam was open and it working well. After I will check my own camera and the boom. Yes, the camera is working well. Yeah, it's well working. After I will check my own. Wait a minute, there's a part 3. 1 minute, there's a part number of 3. So I will so just wait for a minute. Okay. The audio is not well. Yeah. Audio is not well. Yeah. No, it's well, but I have to speak loudly. I have to speak. Let's work with our node buds. Let's connect with our own. Yeah, buds too. Okay. It's our Java program where we do programming. It's our Java program where we do programming. Okay. So yeah, I think it was correct. Property devices. Oman HD default. Oman HD default. Hello. 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 Now it will working, yeah? Now it will working, yeah? Yeah, it working. So let's start our on DSA program. It's, what's that? Okay. Let's go. The second thing was I want just to need start my own second screen. Yeah. This 5 minutes was successfully wasted by me. Almost 5 minutes.
YouTube. Yeah, that's a play. No, I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I that's not. ChatGPT can now create website wireframes. With our new custom GPT, we guide you through the process of creating a powerful prompt for your sitemap and should follow. I just forgot how to connect. I just forgot. Okay, तो क्या करना था? क्या था यार, मैं तो भूल गया यार। तो थोड़ी ना होता है। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। प्रॉपर्टी थी क्या? अब वो तो connected to display in a window wireless. launch the wireless प्रोजेक्टिंग का याद आ गया। प्रॉपर्टी की याद आ रहा था, मालूम नहीं। प्रोजेक्ट आ गया। करते हैं कनेक्ट। ड्राइंग विंडो के तरफ। इट्स नॉट showing bro। भाई मैंने कल ही तो किया है यार, आज क्या हो गया? आजा भाई आजा। सेटिंग्स में जाके भाई वही आएगा, सेटिंग्स में जाके करूंगा तो फिर देख लेता है। बाय।
नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा। खत्म खत्म, नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हम उस पे मैं अपना चला लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट पढ़ाई तो मुझे अकेला कोई करनी है। इसको छोटा कर देते हैं। इतना भी नहीं, इतना नहीं, नहीं इतना भी नहीं। मैं डिस्प्ले हिला डाला। वो इतना छोटा उठा के सीधा रख देंगे यहाँ पे। डन। तो डैश फॉर ऑल, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया। देखना भाई, इसको बंद ही कर देते हैं अपन, इसमें ही देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट ट्राई करना है, करके देखते हैं। शायद से हो जाए, शायद से, बहुत तो नहीं है उम्मीद। दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं यहाँ पे, चलो तू चला जा। अब इसका कोई काम है नहीं। ये अपन टेबल की नहीं जगह रखते हैं इधर से। इसको निकाल के रख देते हैं नीचे, बहुत प्यार से। तो चलो, तो अपन ने कल तक देखा था कि while लूप एक्चुअली डू वाइल लूप, तो डू वाइल का एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि वो पहला पॉइंट जो होता है, मतलब एटलीस्ट, अपनी बात है कि एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही उस चीज को। बाद में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन जब तक गलत नहीं होती तब तक रन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जैसा हर एक लूप का नेचर होता है। फिर हमने नोट्स बनाए थे। यस, नोट्स भी है यार। तो नोट्स में अपन ने देखा था किस लूप का यूज किस सिचुएशन में होना चाहिए। तो फॉर लूप का यूज नोन द नंबर ऑफ आइटरेशन, मतलब कि जब हमें पता हो कि इतनी बार लूप चलाना है तभी चला सकते हैं। वाइल लूप का, तो वाइल लूप अननोन नंबर ऑफ आइटरेशन, अपन को मालूम ही नहीं है भाई कितनी बार चलेगा, जैसे कि यूजर ने डाला है, जैसे कि हमने कल की स्ट्रीम में ही देखा था कि कृणाल सर ने कहा था कि अपन को मालूम नहीं यूजर डाल रहा है उतनी टाइम लूप घूमना चाहिए, तो अपन को मालूम नहीं है कितनी टाइम लूप घूमेगा, तो अपन वाइल लूप का यूज करें, डू वाइल लूप, तो एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, जो मैंने कहा था। और एनहांस्ड फॉर लूप, जो फॉर ईच लूप भी कहते हैं, तो उसमें क्या था कि अपन एक एरे को एज अ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, उसका मीनिंग वही होता है। सही है। चलो आज आगे, कोई क्वेश्चन आ रहा है? While n is not equal to 1, it will say n is equal to 1, hence loop will end. Okay, so in cases in which you definitely have to have one time the loop running, in that case you can use a do while loop. For example, if you want to say take input of so many numbers till the user input some other value like x or something. Okay, in that case, once the value will obviously be input, right? The value will start internally. So let's say we create a question like largest. So you will be giving three numbers, and let's say public static void main scanner input is equal to new scanner system dot in. So basically you are going to input three numbers. Okay, so I can say a, b, and c. Int a is equal to int dot next int b is equal to int dot next int c is equal to int dot next int. Three numbers are here. Question is, find the largest of the three numbers. तीनों का इनपुट एक ही क्यों लिया भाई? How do we do that? If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then So let's look at how we are. चल, मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो क्या है कि पता चल जाए कि, तो अपन इंट ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं कि इनपुट नेक्स्ट इंट, क्योंकि अपन को एक इंटीजर लेना है, तो ऐसे ही इंट बी करके भी ले लेते हैं कि बी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर ही लेना है। वैसे ही इनपुट सी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। ओके, डन। अब तो सही है।
नहीं भाई, नहीं करना, मैं परमिशन नहीं दूंगा ना, जो करना है। Find the largest of the three numbers. How do we do that? So let's look at how we are going to solve this इफ एल्स कंडीशन से हो जाएगा ना, ए बड़ा है तो प्रिंट करा दो ए, और उसका वैल्यू लिख लो, चला problem. जाएगा You can also आगे। create a flowchart for it if you like. But नहीं बनाना imagine पड़ता that है। you have three numbers. Let's ये say, कौन सा ऐप A है? is equal to 10, B is equal to 20, and C is equal to 30. And you have to figure out which is the largest number from all these three numbers. So one way we can do this, we can, let's say, assume that this is the largest number. It's just given. So here I can say, मैंने कहा था ना कि ये होगा। let's say C is greater than is the 79, 65. It's saying initially, let's say it will say मैं तो इनको वेरिएबल में स्टोर नहीं करना कहना चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, बट एक को मैक्स बता देंगे तो मैंने जो सोचा क्या उससे होगा, चलो देखते हैं। इफ, हाँ इफ ही आएगा ना, इफ लगाता है ब्रैकेट, इसके अंदर देखते हैं कि अगर ए का वैल्यू बड़ा है बी से, वैल्यू बड़ा है बी से, तो तू मेरे को एस आउट देगा, एस आउट बस सिस्टम आउटपुट है, एस आउट देगा मेरे को, तू क्या देगा, दे बी इज क्या बी इज, यहाँ के, यहाँ प्लस लगाने का, और यहाँ पे ए बड़ा है ना तो ये लिख देंगे, कोई हर्ज है नहीं है भाई ये। यहाँ एलसीएफ लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन अपन को यूज करने की है। ऐसे ही अगर बी बड़ा है मेरे हिसाब से तो बी को लूंगा, उसको बड़ा दिखाऊंगा इस, आके यहाँ प्रिंट करके यहाँ लाऊंगा और यहाँ कह दूंगा भाई बी बड़ा है, सही है। वैसे ही सेम चीज अच्छे से नहीं हुआ, इतना उठाऊंगा एक, इतना नहीं भाई, इतना यार, इधर लाऊंगा और यहाँ पे सी कर दूंगा, तो मैं सी कर दूंगा, सी अगर बड़ा होता है तो सी को कह दे भाई, ए बी सी तीनों आ गए। देखो पहला ए के बी के साथ, बी का ए के साथ, सी का ए के साथ हुआ, अब ए का भी सी के साथ होगा ना भाई। जैसे इसको पेश करूंगा और यार दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करनी पड़ेगी, या शुरू करो, या सी, या सॉरी या ए लिखो और या सी लिख देते हैं, हो गई ये चीजें। या तुम्हें प्रिंट करवाना होगा, ए बड़ा है ना तो ए प्रिंट करवा लो, हो गया। सी में अभी लाल लाल क्यों है, क्योंकि अपन ने सी इधर छोटा लिखा है तो अपन इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, वैसे ही सेम प्रोसेस आगे भी रिपीट, देखो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ अभी बाकी है, ए का सी के साथ हो गया, बी का सी के साथ करना है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है बट सीधी तरह से तो ऐसे भी आंसर आ ही सकता है ना, बट कम से कम लाइन का कोड उतना अच्छा, वो भी बात सही है। बी का ए के साथ हुआ था भाई, बी का ए के साथ, ए का बी के, बी का ए, बी का सी बाकी था, नहीं तो सी बड़ा बना देते हैं, सी बड़ा बना देते हैं अगर, और यहाँ पे यहाँ बी करके या ये वाला बड़ा बनाते हैं, यहाँ मेरे को बी को प्रिंट करने का है और यहाँ को मेरे को सी को प्रिंट करने का है।
हर एक की स्पेसिफिक 3-3 कंडीशन होगी, यानी कि 6 कंडीशन होनी चाहिए। अब अपन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई, सारी कंडीशन आ गई है। हम अपन यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन होना, तो अपन को यहाँ वैल्यू रख दी है 23, लॉक है 23, 23, 25, 78। देखो भाई, द बिगेस्ट नंबर इज 25। क्या गलती हो रही है, अपन डिबग करेंगे। डिबग कैसे करते हैं मेरे को भी नहीं आता, देखते हैं धीरे धीरे। पीछे क्यों नहीं हो रही है, वो भी सीखना पड़ता है कि भाई मैंने गलती क्या की है। देखो, अपन एक बार फिर से रन देखो, ये वो क्या रहा है। अपन ने पहले एक ही वैल्यू बननी है, तो मैंने 25 डाल दी, फिर मैं डालूंगा 36, और फिर मैं डालूंगा 52, क्योंकि मेरे को the biggest number is 36. Why the biggest number is 36? Biggest number is 52. तो बी का सी के साथ हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। बी का सी के साथ, बी बड़ा है या सी बड़ा है? सी बड़ा है तो सी को ही प्रिंट करवाया है ना भाई मैंने। अगर तुमको कुछ समझ में ना आए, वो पायलट उठाने का, उससे पूछने का कि भाई मैंने गलती किधर की, उससे पूछ लेते हैं भाई, ये क्या देगा कि गलती क्या है। यार ये तो अपना ही चिप रहा है यार। एक काम करते हैं अपन, वो कुणाल सर ने किया है ना, वैसे कर भाई, ये गलत कैसे हो सकता है। एक एल्स भी लगा देते हैं, काउंट नहीं होगा भाई। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ए बड़ा है तो ए लिखो, बी बड़ा है तो बी लिखो, सी बड़ा है सी लिखो, ए बड़ा है तो ए लिखो, बी बड़ा है बी लिखो, सी बड़ा है सी लिखो। ओके, अपन को फिर से रन करने का है इसको। वैल्यू लिखेगा 52, 85, 85,
यहाँ से कौन सा बड़ा होना चाहिए? 86। 85 दिखा रहा है, इधर ही लोचा है किधर, कि आगे तक तो चला गया, इतना तो कंप्लीट कर रहा है, इतना भी कंप्लीट कर रहा है, इधर इसको प्रॉब्लम आ रहा है। ये लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चीजें होनी चाहिए तो वो देंगे। अरे बंद कर दिया। ओके, हो जाएगा। 25, 25 और 25। Let's try to run this code only, debug it, and see how this thing is working. Input, cool. मैंने क्या किया है कि मैक्स करके एक वेरिएबल बना दिया है। A, let's try to इंड करके मैक्स करके एक वेरिएबल दिया, अपन वो भी करके देख सकते हैं। एक इंट मैक्स करके एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन ने एक ही वैल्यू स्टोर कर दी। एक ही वैल्यू स्टोर करने के बाद अपन ने लगाया इफ स्टेटमेंट लगाया, और इस स्टेटमेंट के अंदर अपन लोग लिखेंगे, अगर बी का वैल्यू अगर बी का वैल्यू बड़ा है मैक्स से, तो भाई तू लिखेगा कि एस आउट, भाई बी बड़ा है, बी, भाई ये, भाई मैं क्यों ऐसा बोलूंगा, भाई ये, उसके बाद इसकी वैल्यू बी की लिखूंगा इधर, यहाँ भी प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा बड़ा है। ओके, दैट्स ऑल। अगर सही हो रहा है तो आई थिंक तो यही होना चाहिए, बाकी run this up next to 3 now say मैं तो ये सोचा भी नहीं maximum. था। बी का वैल्यू बड़ा है तो मैक्स को ही बी बना देते हैं, बात तो सही है। मैक्स इज इक्वल टू बी कर देंगे, और वैसे भी इधर इफ लगा के
यहाँ पे मैंने पहले से ही करा हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर अब सी को मैक्स से जोड़ देते हैं। हाँ, वैसे सी को भी मैक्स, सी बड़ा है मैक्स से, तो मैक्स का वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा सी। हो रही है चीजें? हाँ, हो रही है। फिर ऐसा आउट लगा के मैं प्रिंट करवा दूंगा मैक्स को। बूम, प्रोग्रामिंग खत्म। अब अगर कर दिया एंटर द थ्री नंबर्स, तो मेरा 25 है, बाद में 45, बाद में 55। तो भाई 55 बड़ा है। ये Let's give it three numbers 10, 20, 30. लिख लेते हैं भाई। अच्छा, क्या पता। नहीं, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, बट लिख लेते हैं। क्वेश्चन वन, जैसे अपन की फाइल का नाम मेन है, तो वैसे मैं जल्दी लिख लूंगा मेन डॉट जावा, लिखूंगा क्लास में क्लास मेन के अंदर आएगा पीएसवीएम को खोल के उसके अंदर मैं लिखूंगा एक स्कैनर के अंदर मैं लिखूंगा एक इसका नाम, मैं इधर आई लिख लेता हूँ, और यह न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनोड कर दूंगा। तो मैं हर एक वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना होगा, तो इन इज इक्वल टू आई डॉट आर नेक्स्ट इन है ना, नेक्स्ट इन ऐसे इन बी इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट इन इज इक्वल इज इक्वल टू
30 is the maximum one. Let's give it something else. 56, 12, 79. 79 is the maximum one. 33, 789, 65, 789 is the maximum one. That's what's happening. It's saying initially, let's say it will say, let's try to run this code only, debug it, and see how this thing is working. Input, cool. This thing is working. Input, cool. A is equal to 33, so it's saying max is equal to 33. Okay, currently max is equal to 33. Then it's checking, hey, is B greater than maximum value? It's going to be like, yes, it is. Then the new maximum value is going to be B. Input. Debug it and see how this is. Let's try to run this code only. Debug it. And see how this thing is working. Input, cool. It and see how this thing is working. Input, cool. It is value condition 89. One more thing, like before we move on to there can be many ways. If you don't want to take the out 0 and B, and then the next line you can just IntelliJ the math.max call. That is also something you can do. So basically A and B in math thing. Now it should run 57. That is what math.max is doing. Hey people, I'm Anisha. I will be your guide today. Having spent few weeks on this campus, I know all the Whatever. Okay. Case check. Input is equal to new scanner system.
dot in. Okay, so that's the way to take characters. Sorry. Char ch is equal to in dot next dot trim dot char at 0. What am I doing over here? Trim basically means that I'll just hide this for now. Let's say I say print in dot next. This is just going to print the next word. So if I just run this, it's just going to print the next word. Okay, it will take the next word over here and it will print it in this function only. So I can say hello, so it will print hello. Nothing new over here. What is dot trim? Dot trim basically means remove all the extra spaces that are at the end of these words. So I can say if I take next for let's say if I do trim over here. Now let's say if I print it. Let me do a space. Hello. So you can see extra space was removed. Okay, because that is not what we want. We basically want that, okay, we are going to be inputting a number like a character basically, not a number. So I can say I'm going to be inputting k. So this k is actually a string input. You cannot take like a char input. It will convert it into char when you use this method called char at 0. Don't worry about this right now because string is a separate module of this course. So we'll look into it later on, like what is char at and everything. But in short, if you want to understand, it's not that complicated. This is a string. Char at basically means give me the character at this index of the string. String, you can imagine it as a character array. Array is actually the next topic, so it will be much more clearer then. But in arrays, index starts from 0. So if I'm saying something like hello, okay, so if I'm saying, let's say string word is equal to something like hello, and then I print word dot char at 0. This is going to print which is the character at this word's 0th index. H, it will print H. H, which is the character at index number 2. So 0, 1, 2. L, it will print L. Okay, so this char at is actually returning a character type. You can see over here, character type. Okay, so if it is returning a character type, then we already have learned about data, data types. So I can store it in a character type. That's why it's working. Now I will input a character and it will be stored.
stored in the ch input, let's say L type character. Question is, you need to check whether this is lowercase or uppercase. So the ch and everything you can use like the ASCII values and stuff, but we can also do something like if, because since it's a character, I can directly compare it with the values of lowercase a and lowercase z, if it lies in the range of that, because in the type section we saw that it actually converts it into like checks when integers. So we already saw that. If you haven't, check out the link in the description below. We have an entire session on that, on types and everything and how these compare. If this is greater than equal to a and ch is less than equal to z. Basically this is something we did not cover before. And so basically if you want to add two conditions, like both of these conditions need to be true, you can use the and operator. Okay, so it will only be true if this is true and this is true. Okay, if we go into our conditionals again, and if I just hide this thing, so you can see multiple, I can say if, let's say int a is equal to 10 and int b is equal to 20. So I can say if a is equal to 10 and b is equal to 20. So is a equal to 10? Yes, it is. Or basically means it is basically comparing a equal to 35 of. All right, we just start by number 0 1 30 for this. Will be 0 to let's say char at is actually returning a character type. I just hide this thing. Behind it and options like both type section, we saw that it actually converts it into like checks when integers. So we already saw that. If you haven't, check out the link in the description below. We have an entire session on that, on types and everything. And how these compare. This is greater than equal to a and ch is less than equal to z. Basically this is something we did not cover before. And so basically if you want to add two conditions, like both of these conditions need to be true, you can use the and operator. Okay, so it will only be true if this is true and this is true. Okay, if we go into our conditionals again, and if I just hide this thing, so in the multiple I can say if, let's say
conditionals again. This is true. And operator. Okay, so it will only be true if this is true and this is true. Okay, if we go into our conditionals again, and if I just hide this thing, so you can see multiple. I can say if, let's say, condition. Okay, like we are adding in the range.
DSA हमने बना लिया था Solo, claro, por salud, auto. Ya, vale.